श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागो भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अथ श्रीमङ्गलचण्डी स्तोत्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गलचण्डिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रिणां मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनि शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितं बिम्बोष्टिं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवी मङ्गलचण्डिके संहर्त्री विपदां राशिर्हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मङ्गलाधिष्ठात्रिदेवी मङ्गलानां च मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी
सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तदमङ्गलं प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तदमङ्गलं वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली स्तोत्र। नमः शङ्करकान्तायै सारायै ते नमो नमः। नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगत्कर्त्यै नमो नमः। नमोऽस्तु ते जगन्मात्रे कारणायै नमो नमः। प्रसीद जगतां माता सृष्टिसंहारकारिणी त्वत्पादौ शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थिकां कुरु त्वयि मे विमुखायां च को मां रक्षितुमीश्वरः त्वं प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तवत्सले युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा तं वरं सफलं कर्तुं त्वमर्हसि वरानने रेणुकीयस्तवं श्रुत्वा प्रसन्ना भवदम्बिका मा भैरित्येवमुक्त्वा तु तत्रैवान्तरधीयत एतद्भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् महाभयात् समुत्तीर्णः स भवेदेवलीलया स पूजितश्च त्रैलोक्ये तत्रैव विजयी भवेत् ज्ञानी श्रेष्ठो भवेच्चैव वैरिपक्षविमर्दकः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवच। ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्రైं अस्त्राय फट् इति दिगबन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालो ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र
तारकाख्यं महाशुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिरमुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायूर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा विनियोगः ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत् ॐ अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ अग्निगर्भाय कवचाय होम् ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट् ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट् पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिगबन्धः अथ ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम् अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण
महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 वौषट स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फम 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 फट स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लोम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ॐ टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं अङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं अणं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिगबन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पंचमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठिन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अथ श्रीमङ्गलस्तोत्र। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो
भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागो भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा अथ श्री मंगलचंडी स्तोत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रिणां मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितं बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगलचंडिके संहर्त्री विपदां राशिर् हर्षमंगलकारिके हर्षमंगलदक्षे च हर्षमंगलचंडिके शुभे मंगलदक्षे च शुभमंगलचंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगलमंगले सतां मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्या मंगलवारे च मंगलाभीष्टदैवते पूज्ये मंगलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मंगलाधिष्ठात्री देवी मंगलानां च मंगले संसारमंगलाधारे मोक्षमंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमंगलवारे च पूज्ये त्वं मंगलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मंगलचण्डिकां प्रतिमंगलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः
तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तदमङ्गलम्। प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला। द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च। तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च। चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता। पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा। ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी। देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रम् यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तदमङ्गलम्। वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली स्तोत्र। नमः शङ्करकान्तायै सारायै ते नमो नमः। नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगत्कर्त्यै नमो नमः। नमोऽस्तु ते जगन्मात्रे कारणायै नमो नमः। प्रसीद जगतां माता सृष्टिसंहारकारिणी। त्वत्पादौ शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थिकां कुरु। त्वयि मे विमुखायां च को मां रक्षितुमीश्वरः। त्वं प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तवत्सले। युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा। तं वरं सफलं कर्तुं त्वमर्हसि वरानने। रेणुकेयस्तवं श्रुत्वा प्रसन्ना भवदम्बिका। मा भैरित्येवमुक्त्वा तु तत्रैवान्तरधीयत। एतद्भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् महाभयात् समुत्तीर्णः स भवेदेव लीलया। स पूजितश्च त्रैलोक्ये तत्रैव विजयी भवेत्। ज्ञानी श्रेष्ठो भवेच्चैव वैरिपक्षविमर्दकः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवच। ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन् मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्రైं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालो ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवं
एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णो वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायूर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा विनियोगः ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत् ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः ॐ अंजनासुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ अग्निगर्भाय कवचाय होम ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट् ॐ पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट् पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिगबन्धः अथ ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम् अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पंचमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 वौषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय
फम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय लोम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम कम खम गम घम अंगम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम अणम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम लं क्षम स्वाहा इति दिगबन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्रीरामचंद्र कृपापादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुखवीर हनुमते श्रीरामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठिन्नरः एकवारं जपित स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठिन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठिन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठिन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठिन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठिन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठिन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठिन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठिन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठिन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठिन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। अथ श्री मंगल स्तोत्र। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं
कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येहपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अथ श्री मंगलचंडी स्तोत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रिणां मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनि शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितं बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगलचंडिके संहर्त्री विपदां राशिर हर्षमंगलकारिके हर्षमंगलदक्षे च हर्षमंगलचंडिके शुभे मंगलदक्षे च शुभमंगलचंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगलमंगले सतां मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्या मंगलवारे च मंगलाभीष्टदैवते पूज्ये मंगलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मंगलाधिष्ठात्री देवी मंगलानां च मंगले संसारमंगलाधारे मोक्षमंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमंगलवारे च पूज्ये त्वं मंगलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मंगलचण्डिकां प्रतिमंगलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मंगलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तदमंगलं प्रथमे पूजिता देवी शंभुना सर्वमंगला द्वितीये पूजिता देवी मंगलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मंगलेन नृपेण च चतुर्थे मंगले वारे सुंदरीभिश्च पूजिता
पंचमी मंगलाकांक्षैर्नरैर्मंगलचंडिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेश हि पूजिता सदा ततः सर्वत्र संपूज्य सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रम् यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत् तद् अमङ्गलम् वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली स्तोत्र। नमः शङ्करकान्तायै सारायै ते नमो नमः। नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगत्कर्त्यै नमो नमः। नमोऽस्तु ते जगन्मात्रे कारणायै नमो नमः। प्रसीद जगतां माता सृष्टिसंहारकारिणी त्वत्पादौ शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थिकां कुरु त्वयि मे विमुखायां च को मां रक्षितुमीश्वरः त्वं प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तवत्सले युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा तं वरं सफलं कर्तुं त्वमर्हसि वरानने। रेणुकीयस्तवं श्रुत्वा प्रसन्ना भवदम्बिका मा भैरित्येवमुक्त्वा तु तत्रैवान्तरधीयत। एतद्भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् महाभयात् समुत्तीर्णः स भवेदेवलीलया स पूजितश्च त्रैलोक्ये तत्रैव विजयी भवेत्। ज्ञानी श्रेष्ठो भवेच्चैव वैरिपक्षविमर्दकः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवच। ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्రైं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालो ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णो वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं
पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायूर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। विनियोगः। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ॐ अंजनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय होम। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिगबन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम्। अथ मंत्रः। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पंचमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लोम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ॐ
टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं अङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं अणं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिगबन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। अथ श्रीमङ्गलस्तोत्र। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागो भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं
ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अथ श्री मंगलचंडी स्तोत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रिणां मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनि शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितं बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगलचंडिके संहर्त्री विपदां राशिर् हर्षमंगलकारिके हर्षमंगलदक्षे च हर्षमंगलचंडिके शुभे मंगलदक्षे च शुभमंगलचंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगलमंगले सतां मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्या मंगलवारे च मंगलाभीष्टदैवते पूज्ये मंगलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मंगलाधिष्ठात्री देवी मंगलानां च मंगले संसारमंगलाधारे मोक्षमंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमंगलवारे च पूज्ये त्वं मंगलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मंगलचण्डिकां प्रतिमंगलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मंगलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तदमंगलं प्रथमे पूजिता देवी शंभुना सर्वमंगला द्वितीये पूजिता देवी मंगलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मंगलेन नृपेण च चतुर्थे मंगले वारे सुंदरीभिश्च पूजिता पंचमे मंगलाकांक्षैर्नरैर्मंगलचंडिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः
तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत् तद् अमङ्गलम् वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली स्तोत्र। नमः शङ्करकान्तायै सारायै ते नमो नमः। नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगत्कर्त्यै नमो नमः। नमोऽस्तु ते जगन्मात्रे कारणायै नमो नमः। प्रसीद जगतां माता सृष्टिसंहारकारिणी त्वत्पादौ शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थिकां कुरु। त्वयि मे विमुखायां च को मां रक्षितुमीश्वरः। त्वं प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तवत्सले। युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा तं वरं सफलं कर्तुं त्वमर्हसि वरानने। रेणुकीयस्तवं श्रुत्वा प्रसन्ना भवदम्बिका माभैरित्येवमुक्त्वा तु तत्रैवान्तरधीयत। एतद्भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् महाभयात् समुत्तीर्णः स भवेदेव लीलया। स पूजितश्च त्रैलोक्ये तत्रैव विजयी भवेत्। ज्ञानी श्रेष्ठो भवेच्चैव वैरिपक्षविमर्दकः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवच। ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन् मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्लौं कीलकं क्रूं कवचं क्రైं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालो ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले
यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायूर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। विनियोगः। ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ॐ अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय होम्। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिगबन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम्। अथ मन्त्रः। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लों 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं अङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं अणं
तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिगबन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।